हेलो हेलो Yes, sir. कल मैंने आपके साथ ये रिज़ल्ट डिस्कस किया था. इनफैक्ट वी प्रूव्ड द रिज़ल्ट. और मैंने कल ही आपको बताया था नाउ विल बी प्रूविंग दिस रिज़ल्ट फॉर ये जो रिज़ल्ट है हमने कल देखा था फॉर L1. इसी रिज़ल्ट को अब हम देखेंगे फॉर LP. नाउ विल गो बेसिकली वन स्टेप फर्दर. ठीक है. पहले ये अब जिसका वो LP वर्जन है ये रिज़ल्ट का वो स्टेट कर रहा हूँ. And once we do this result, now then after that we can conclude that this LP is the closure of C sub Cx. That means LP is the completion of C sub C, because C sub C is embedded in LP, and if LP is the closure of C sub C, it then means that LP is the completion of C sub C, where C sub C is the collection of all possible continuous functions with compact support defined on this locally compact Hausdorff space. So basically this will be the last result in this direction. फाइनल डेस्टिनेशन पर अब हम पहुंचने वाले हैं. लेट एक्स स्टार ये स्टेटमेंट है इसका बी अ लोकली कॉम्पैक्ट Hausdorff स्पेस comma boldface b its Borel sigma algebra. It's Borel sigma algebra and mu from boldface b into 0 infinity be a regular Borel measure. Full stop. If p be a number in 1 infinity, close it at 1, open at infinity, then for each f in LP x b mu, for each f here and each epsilon positive, there exists a g sub epsilon. There exists g sub epsilon. और ये कहाँ होगा? It will be in the collection of continuous functions with compact support defined on X. Continuous real valued functions with compact support. And we know that this collection is contained in LP, because every continuous function with compact support is an LP function. So it's already embedded in LP X B mu. And the theorem says that for each f and for each epsilon there will be a g sub epsilon. Basically you pick an f and an epsilon, उस f और उस epsilon के corresponding एक g sub epsilon होगा. और इस f और g sub epsilon में जो relation होगी वो ये होगी, such that the function f and the function g sub epsilon, they will be epsilon close in the LP metric. जो LP metric है मतलब LP distance जो इनके दरमियान होगी f और g sub epsilon के दरमियान जो LP distance है, that will be less than epsilon. वही लिख रहा हूँ, that such that integral over x mod
f minus g sub epsilon raised p d mu whole raise 1 by p. This is actually the LP distance between f and g sub epsilon, and it will be strictly less than epsilon. So that means these continuous functions with compact support, they go arbitrarily close to LP functions. They go arbitrarily close to each LP function. That is the reason this collection C sub Cx, it is dense in LP. So therefore LP is the completion. Because LP, we know that by Rees-Fisher theorem, we know that it's a complete space. ये सारी चीज़ें ना जहन में रखने के बाद आप ये conclude कर सकते हैं that this LP is indeed the completion of C sub Cx. I will prove this. And again we'll be proving this result in two cases. जैसे कल हमने वो इसका जो वो P equal to 1 केस एड्रेस किया था ना, 2 केसेस में, वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे. और शायद स्टेटमेंट जो अभी दिखा रहा था आपको, हाँ यहाँ ना ये गड़बड़ है एक, इसको अगर आपने ये देखा होगा तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली S, दिस इज़ एक्चुअली B, बिकॉज यहाँ जो सेमरिंग होता है इट इज़ दिस बोरल सिग्मा अलजेब्रा, और यहाँ भी वही होगा. इट्स नॉट एक्चुअली S, इट्स B, बिकॉज म्यू इज़ अ मेजर डिफाइनर ऑन B. ठीक है, ये हमने कल किया था. यूजिंग दिस विल प्रूव दिस. This is more general than this. यहाँ आप कंसिडर कर रहे हैं L1 functions और यहाँ LP functions. और यहाँ जो metric जो आप देख रहे हैं, this is L1 metric. यहाँ G sub epsilon is close to F, but in the L1 metric. आपसे क्या होगा? This is actually also true in the LP metric for P greater or equal to 1. So now we'll prove this. अगर कोई question है about the statement या कोई और relevant question तो आप पहले पूछ सकते हो. Otherwise I'll proceed with the proof. To prove this, we consider cases. Now case 1 will be the simplest of the cases. When this LP function f is equal to chi sub a, where a is a measurable set with finite outer measure. That means with mu star a less than infinity. मैं यहाँ mu star लिख रहा हूँ, आप यहाँ mu नहीं लिख सकते, because ये जो a है, मैं ये claim नहीं कर रहा हूँ कि that this a is a Borel set. It's a measurable set. ये technicalities होती है, और you have to be aware of these things. आप mu star की जगह mu लिख सकते हैं, लेकिन कब? If you are dealing with a semirings element. अब यहाँ जो a है, it's a measurable set. Measurable set need not be a semirring element. Although every semirring element is measurable, but not every measurable is a semirring element. So this a may be outside the semirring. In this case, the semirring is the Borel sigma algebra. So this a may not be a Borel set. It may or may not be. So to be on the safer side, we are using mu star. Being mathematics students, ये चीज़ें ना आपने देखनी भी है और आपने इनको फॉलो भी करना होता है. Less than infinity. So we'll first consider this case. Now what can you tell me about this? मैं आपसे कह रहा हूँ, the yesterday's result is readily applicable. बताइए कैसे? Because यहाँ मैं जो f ले रहा हूँ, it's characteristic function of a, and a के बारे में आप assume करें it's a measurable set with finite measure. Characteristic function of a, where a is a measurable set, so therefore it becomes a simple function. And since mu star a is finite, so therefore it becomes a stub function. Stub functions are integrable functions. So therefore this f is an L1 function. और चूंकि हमने कल result prove किया था for L1 function, so I can directly use this result.
ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ. I'm directly using yesterday's result. Then for each epsilon positive, for each epsilon greater than 0, there exists a g sub epsilon. और ये कहाँ होगा? It will be in the collection of continuous functions, continuous real valued functions with compact support defined on x. And this we know that it's contained in, ये मैंने पहले ही आपको दिखाया, it's contained in LP x b mu. Such that a Kal-Wali theorem जो है, it tells us that we can basically achieve any degree of closeness in the L1 metric. You can achieve any degree of closeness. So in particular, you can also achieve this degree of closeness, 2 times epsilon by 2 whole raised p. We can also achieve this degree of closeness. So that means the L1 distance between this f and this g sub epsilon, which is actually this integral over x mod f minus g sub epsilon d mu. We can find such a continuous function with compact support, which is 2 times epsilon by 2 raised p close to f. तो ऐसा एक continuous function with compact support आप ढूंढ सकते हैं by the previous result. ठीक, इसका रीज़न है previous result. हमारा जो previous result है, it's by that. Don't confuse yourself with the thing that वहाँ आपको epsilon दिख रहा है और यहाँ आप कह रहे हैं कि यहाँ तो कुछ और है. वहाँ आइडिया को देखिए. You can achieve any degree of closeness. So in particular, you can achieve this degree of closeness also. ठीक है, ये है आइडिया यहाँ. अब इसके बाद and in fact I think I should be शायद हम एक डिटेल ना मिस कर रहे हैं. वो ये है कि because I should incorporate that thing into this. मैं इसको ऐसे थोड़ा डिफरेंट, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंटली इसको लिखूँगा. देयर एग्जिस्ट्स अ जी सब एप्सिलॉन. यहाँ ना एक माइन्यूट डिटेल जो है ना वो मिस हो रही है, जो इवेंचुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एज फार एज दिस प्रूफ इज कंसर्न. देयर विल बी अ जी सब एप्सिलॉन विच टेक्स एक्स इनटू 0 1 एक्चुअली. आप एक ऐसा जी सब एप्सिलॉन ढूंढ सकते हैं विच विल बी कंटिन्यूस एंड हैविंग कॉम्पैक्ट सपोर्ट. ये जैसे हमने वो कल वाले प्रूफ में देखा था ना, ये बिल्कुल वैसे ही होगा. जी सब एप्सिलॉन फ्रॉम x to 0 1
बेहतर होगा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन g sub epsilon from x into 0 1 with compact support. This compact support जो है ना, if the fact this g sub epsilon has compact support, this actually allows us to put this g sub epsilon in this integration. Only then we can integrate this. Compact support. बाकी फिर ठीक है. Such that this is. यहाँ जो g sub epsilon होगा, it will be taking values in 0 1 actually. ये कल जैसे मैंने आपको दिखाया ना, असल में वो थियरम की प्रूफ से वो आइडियाज़ आपने बोरो करने हैं. सो ये किया जा सकता है. This is my previous result. ठीक है. तो आप ये देखिए नाउ, ये इसको कोई लेबल आप दीजिएगा. लेट्स कॉल इट स्टार. सो नाउ आप इसे देखिए. इफ यू कंसिडर द मॉडुलस ऑफ f minus g sub epsilon, in the first place this will be less than or equal to modulus of f using triangle inequality plus modulus of g sub epsilon, right? Now mod f being the characteristic function, और characteristic function के दो ही values होते हैं 0 और 1, so modulus of f it cannot exceed 1. Likewise, since g sub epsilon it takes values in 0 1, so again g sub epsilon and the modulus it cannot exceed 1, so this plus 1 it cannot exceed 1 plus 1. Basically this plus this, it cannot exceed 1 plus 1, and 1 plus 1 is 2. So this thing is less than or equal to 2. ठीक है. यहाँ लिखेंगे अब now since, इस तरह से थोड़ा सा ना ये ड्राफ्टिंग अच्छी हो जाएगी इसकी. Now since this is less than or equal to this is less than or equal to 1 plus 1 which is equal to 2. फिर इसके बाद ऐसे it follows this. अगर आप इसे लेंगे इंटीग्रल और x mod f minus g sub epsilon रेज p d mu. अब देखिए, और हाँ यहाँ मैं इसका ये pth रूट भी ले रहा हूँ इसी के साथ, होल रेज 1 by p. अब हम क्या करेंगे, ये 1 by p जो pth रूट है इसको ऐसे ही रखेंगे. जो अंदर जो इंटीग्रेंड है उसको देखिए मैं कैसे लिखूंगा. राइट, दिस इज इंटीग्रल ओवर x. This is mod f minus g sub epsilon raise p. I'll write this as mod f minus g sub epsilon times mod f minus g sub epsilon raise p minus 1 d mu. Bases same powers will be added, तो ये फिर से वही आएगा raise p. Then whole raise 1 by p. अब ये जो है ना mod f minus g sub epsilon, यहाँ पर आप ये वाला एस्टिमेट जो है हमारे पास इसके रिगार्डिंग है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे. वी नो दैट दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 2, सो दिस रेज p minus 1 विल बी लेस देन आर इक्वल टू 2 रेज p minus 1. ठीक, एंड वी नो दैट इंटीग्रल्स आर मोनोटोन. सो यूजिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज यू कैन कंक्लूड दैट दिस इज लेस देन आर इक्वल इंटीग्रल ओवर x. अब इसकी जगह आएगा 2 रेज p minus 1, और वो इंटीग्रल के बाहर आप ले सकते हैं. ठीक है ना, and take it outside the integral, so it will be 2 raise p minus 1. और हाँ, लेकिन ख्याल ये रखना है आपने कि बाहर से वो जो pth रूट है वो अभी भी वैसा कि वैसा ही है pth रूट. ये इसकी जगह 2 raise p minus 1 वो इंटीग्रल से बाहर आएगा, और इंटीग्रल में जो अब इंटीग्रेंड रहेगा इट विल बी mod f minus g sub epsilon d mu. ठीक है, उसको ज़्यादा दूर लिखा था. इट्स लाइक दिस, ये होगा. अब ये जो है ये इंटीग्रल जो है इसके लिए हमारे पास एस्टिमेट अवेलेबल है, वो ऊपर आप देखिए जिसको हमने शायद कुछ लिखा है स्टार. नो स्टार सेज दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 times epsilon by 2 raised p. ठीक है, सो यूजिंग स्टार दिस विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन, ये एक तो अपना यहाँ ये 2 raised p minus 1, और ये इंटीग्रल की जगह जो एस्टिमेट आएगा वहाँ से इट इज़ 2 times
एप्सिलॉन बाई 2 होल रेज p, ठीक, और ऊपर से वो है व्हाट 1 बाई p. अब यहाँ क्या होगा, दिस 2 एंड दिस 2 रेज p माइनस 1 मेक्स 2 रेज p, और नीचे भी एप्सिलॉन की जगह जो है ना डिनोमिनेटर में 2, ऊपर से होल रेज p, सो इट इज अगेन 2 रेज p, 2 रेज p कैंसिल होगा, सो दिस इज एप्सिलॉन रेज p होल रेज 1 बाई p विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन. ठीक है. सो अगेन वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट इन दिस केस. मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दैट ये हो रहा है. The LP distance between f and g sub epsilon is strictly less than epsilon. Now we have to consider the general case. अब चूंकि ये कल भी हमने जो वो थ्योरम जो करी थी उसमें भी प्रूफ कुछ ऐसा ही था, तो जनरल केस में जो मैं आपको सारी डिटेल्स नहीं दूंगा, मैं आपको खाली उसका स्केच दूंगा, बाकी डिटेल्स आप खुद फिल इन करेंगे. सो दिस विल बी केस सेकंड. केस सेकंड विल बी द जनरल केस. जनरल केस. लेट यहाँ f कोई भी फंक्शन हो सकता है ऑफ दिस LP. लेट f एन बी एन LP फंक्शन, LP x p mu and epsilon positive be given. अब सबसे पहले आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे. इट्स अ प्रीवियस एक पिछला रिजल्ट है जो मैंने शायद परसों आपको दिखाया था. मैंने आपको परसों दिखाया था द कलेक्शन ऑफ स्टफ फंक्शंस इज डेंस इन LP एंड, ठीक है, वो रिजल्ट का हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे. Since the collection of stuff functions is norm dense. Norm dense means dense with respect to the norm of LP. Is norm dense in LP x b mu. तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, we can find a stuff function phi from x star with, now that this phi is going to be a stuff function, तो इसकी एक standard representation भी होगी. So I am assuming that this is the standard representation with phi equal to this summation I runs from 1 to n ai chi sub ai with this as the standard representation of phi such that this stuff function, it will be epsilon by 2 close to the LP function f, and the reason is the fact that these stuff functions are dense in LP. तो ऐसा किया जा सकता है. इंटीग्रल ओवर x mod f minus phi raise p whole raise 1 by p
p1 will be, can ensure that this is strictly less than epsilon beta. अब ऐसा एक स्टेप फंक्शन होगा. और इसका रीज़न ये है बिकॉज द कलेक्शन ऑफ स्टेप फंक्शंस इज नॉर्म डेंस इन एलपी. तो ऐसा एक स्टेप फंक्शन डेफिनेटली होगा. नाउ यू हैव टू लुक एट दिस फी जैसे कल हमने किया था. यूजिंग द स्केलर्स ऑफ फी वी क्रिएटेड जी सब एप्सिलॉन. आपने भी यहाँ वही करना है. बट यहाँ ये आप बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, वहाँ वी आर डीलिंग विद L1 नॉर्म. वहाँ कोई पावर इन्वॉल्व नहीं था. यहाँ वी आर डीलिंग विद LP नॉर्म. वी हैव अ P पावर हेयर. तो वो चीज़ का ख्याल रखना है आपको और इस पर आप सोचिएगा क्या होगा यहाँ जी सब एप्सिलॉन. मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ. यू हैव टू यूज़ दीज स्केलर्स एंड यू हैव टू यूज़ केस 1 जैसे ना कल हमने किया था. एक तो आपने केस 1 का इस्तेमाल करना है. बेसिकली ये जो आप इस फी में ये जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस देख रहे हैं ना, काई सब ए सब आई, इन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस के लिए बाय केस 1 द रिजल्ट इज ट्रू. सो इन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस के लिए देयर विल बी कंटिन्यूअस फंक्शंस विद कॉम्पैक्ट सपोर्ट. ठीक है. देखिए आपने क्या करना है. आप ऐसा करिएगा, मैं खुद ही बता रहा हूँ. आप लेट जी सब एप्सिलॉन बी इक्वल, आपको बस ये pth पावर का ख्याल रखना है, बाकी कुछ नहीं. और ये क्या इवेंचुअली आपको एप्सिलॉन आना चाहिए. सो विल बी टेकिंग जी सब एप्सिलॉन एज मॉड. ठीक है. समेशन मेरे ख्याल से कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी. समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n ai हाँ, पहले तो मुझे वो फंक्शन चाहिए. मैं डायरेक्टली यहाँ ना पहले ऐसे ना फर्स्ट यू विल इन्वोक केस 1. इस तरह से आप करेंगे. उसके बाद वो जी सब एप्सिलॉन क्रिएट होगा. नाउ बाय केस 1 जिसका हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है, वी कैन फाइंड, इस तरह से लिखेंगे हम, केस 1 फॉर ईच आई इन द सेट 1 2 so on up to n. बेसिकली ये आइस की बात कर रहा हूँ जो ना यहाँ ये फी के समेशन में आप देख रहे हैं ना, आई रन फ्रॉम 1 to n. फॉर ईच सच आई वी कैन फाइंड अ कंटिन्यूअस फंक्शन. और वो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम अभी डिनोट करेंगे बाय जी सब आई. Can find a continuous function g sub I from x and r. और ये continuous function में क्या होगी? It will have a compact support with compact support such that the LP distance between chi sub a sub I and g sub I this will be, you can make it
as small as you please, जैसा कि आपने केस 1 में देखा. So in particular you can make it less than epsilon by, हम शायद वही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ फिर से, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ. हाँ वही होगा, epsilon by 2 times n times mod ai. And this thing is permissible. Why? Because mod ai is non-zero. वो पता है आपको. Standard representation में जो scalars आते हैं, they are non-zero. So ये किया जा सकता है. You call it, कोई label इसको दीजिएगा, say first. ठीक है. अब आप क्या करिए? Finally, you observe this. सॉरी, पहले मुझे अब वो जी सब एप्सिलॉन क्रिएट करना है. बेसिकली वही स्केच मोड में हूँ मैं. शायद सोच रहा हूँ कि मैं आपको स्केच दे रहा हूँ. अब ये स्केच नहीं है, ये प्रॉपर प्रूफ है इसका. अब मैं खुद से ही आपको ये दिखा रहा हूँ. अब यहाँ क्या करेंगे? अब मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज जी सब एप्सिलॉन ऑफ दिस केस. इस केस का जी सब एप्सिलॉन क्या होगा? जी सब एप्सिलॉन इन दिस केस will be equal, rather we are defining it, so it will be defined as summation I runs from 1 to n ai times g sub I. ठीक है. where these g sub i's are these g sub i's जो यहाँ आपको केस 1 इस्तेमाल करके मिल रहे हैं ना, these g sub i's, यही g sub i's का मैं इस्तेमाल करके ये g sub epsilon क्रिएट कर रहा हूँ. बेसिकली इट्स एक्चुअली फाइनल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज जी सब आइज. और यहाँ आप जो स्केलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, द स्केलर्स आर एक्चुअली द करस्पॉन्डिंग स्केलर्स इन दिस स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फी. So anyway, it will be a continuous function with compact support because it's a finite linear combination of continuous functions with compact support. So g sub epsilon is a continuous function with compact support. Then this g sub epsilon, it will be in c sub c x, and if you compute the LP distance between f and this g sub epsilon, whole raised 1 by p. In the first place आप देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. I can write this as integral over x mod f minus phi plus phi. ये वही स्टफ फंक्शन है जो ऊपर हमने देखा, इसमें इन्वॉल्व किया था, उसी को मैं यहाँ एड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. माइनस जी सब एप्सिलॉन, देन mod raised p whole raised 1 by p. इसको अब अगर वो नॉर्म नोटेशन में करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपके लिए ना लिखना कन्वीनियंट रहेगा अगर इस चीज़ें आप नॉर्म नोटेशन में लिखेंगे. बट एक्चुअली वो कंप्यूटेशन दो दिखाने के लिए इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, वहाँ हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना ही है, तो मैं पहले से ही ये इंटीग्रल नोटेशन में लिख रहा हूँ. अदरवाइज ये नॉर्म नोटेशन में भी लिखा जा सकता है. नाउ क्या करेंगे आप? यूल फर्स्ट यूज द Minkowski's inequality. So this will be less than or equal integral over x, which is actually the triangular inequality for the LP norm. So it will be f minus phi mod raised p. Oh sorry, ये लिखना भूल गया मैं. हाँ, d mu. We are integrating with respect to measure mu. ऊपर भी नहीं, वो देख लीजिएगा, अगर कहीं नहीं होगा तो वो लिखिएगा. वैसे यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि वी आर ओनली डीलिंग विद अ सिंगल मेजर. ये प्रॉब्लम वहाँ होती है जब आपके पास एक से ज़्यादा मेजर्स होता है. यहाँ इट इज़ अंडरस्टूड इट मस्ट बी इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू म्यू, बट लिखना बेहतर रहता है, वो लिखिएगा. डी म्यू होल रेज 1 by p प्लस इंटीग्रल ओवर x mod phi minus g sub epsilon raised p d mu whole raised 1 by p. ठीक है.
अब ये जो पहली टर्म आप यहाँ ये इनइक्वालिटी में देख रहे हैं ना, इनइक्वालिटी के जो हमारा राइट साइड है इसमें जो पहली टर्म देख रहे हैं, इसके लिए हमारे पास एस्टिमेट अवेलेबल है और वो ये है, वी नो दैट दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करेंगे हम, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस व्हाट अबाउट दिस, यहाँ फी और जी सब एप्सिलॉन को जो इनकी जो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन है ना, जो इनकी एक्चुअल शक्ल है उनमें आप इनको लिखेंगे. सो दिस विल बी इंटीग्रल ओवर एक्स mod summation I runs from 1 to n a sub I chi sub a sub I, then g sub epsilon is summation I runs from 1 to n ai g sub I. ठीक है, mod raise p whole raised 1 by p, and again we'll be using the Minkowski's inequality because this is summation here. So by using the after using the Minkowski's inequality you can see that this is less than or equal, basically epsilon by 2 तो वैसे ही आएगा, यहाँ Minkowski's inequality इस्तेमाल हो रही है. So this will be less than or equal to summation, बीच में प्लस है, I runs from 1 to n, ठीक है, इंटीग्रल ओवर x mod ai, ये कॉमन आएगा, बेसिकली ये दो समेशंस को कंबाइन करना है, ai कॉमन आएगा तो फिर वहाँ रहेगा ai टाइम्स काई सब ai माइनस जी सब i, फिर मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी जब आप अप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली आपको ये मिलेगा ai काई सब ai माइनस जी सब i mod क्लोज रेज p and then whole raised 1 by p. ये आपको मिलेगा आफ्टर यूजिंग द मिनकॉस्कीज़ इनइक्वालिटी. अब ये जो ai है इस पे मॉडुलस है, मॉडुलस के ऊपर पावर है p और वो बाहर से है pth रूट, और ai बीइंग अ स्केलर इंटीग्रल से बाहर आएगा, बेसिकली ai रेज p बाहर आएगा, मॉड ai रेज p बाहर आएगा, और चूँकि ऊपर से pth रूट है तो बेसिकली वहाँ क्या होगा, इट विल बी ओनली मॉड ai, क्योंकि जो pth root है, it will absorb the pth power. So it will be what, this is equal to epsilon by 2 plus summation I runs from 1 to n mod ai, फिर इसके साथ क्या रहेगा, इंटीग्रल ओवर x mod chi sub ai माइनस जी सब आई रेस p होल रेस 1 by p. ठीक है, अब यहाँ वो जो अभी हमने शायद क्या लेबल दी थी उसको अभी हमने फर्स्ट, शायद हाँ फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे. फर्स्ट में हमें पता है फॉर ईच i at 1 to n we have this thing, this is less than epsilon by 2 n times mod ai, इसका इस्तेमाल करिए यहाँ. It will be strictly less than epsilon by 2 plus summation I runs from 1 to n mod ai, और ये इंटीग्रल की जगह ये जो ये देख रहे हैं ये यहाँ ये LP डिस्टेंस जो है इसकी जगह आएगा epsilon by twice n mod ai. mod ai कैंसिल होगा, कैंसिलेशन इज पॉसिबल, ये कल भी मैंने आपको बताया था, एंड इवेंचुअली दिस इज epsilon. So this completes the proof. ठीक है, तो ये जनरल केस भी अब हो गया, और इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने कल ही आपको बताई थी. दिस बेसिकली मीन्स दैट दिस c sub cx is dense in LP being complete, और ये चूंकि ऑलरेडी एम्बेडेड है, so therefore it means that LP is the completion of C sub c. So in particular यहाँ से फिर आप कंक्लूड कर सकते, बिकॉज दिस इज अ मोर जनरल सिनेरियो, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी हियर. अब अगर आप x की जगह लेंगे क्लोज्ड इंटरवल ए बी, म्यू की जगह अगर आप लेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑफ लिबेग मेजर टू ए बी, और जो टोपोलॉजी है यहाँ वो इफ यू टेक दिस टोपोलॉजी टा एज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूजुअल टोपोलॉजी टू ए बी, या बेसिकली मोर प्रिसाइजली आई शुड से दैट द subspace topology on closed AB induced by the usual topology of R. If
you can conclude that the completion of CAB with the integral norm is, if you are taking the integral norm where the basically I should say the completion of CAB with P norm, because जो integral norms है ना वहाँ ये मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए. For each p in 1 to infinity, you can give rise to an integral norm on CAB, and under each of these integral norms, the CAB is incomplete. और इसका जो completion है, it's LP. If you are taking CAB with P integral norm, इसका जो completion होगा, it will be LP. So LP is the completion of CAB. Completion of CAB with the P norm. If you are taking CAB with P norm, इसका जो completion होगा, that will be LP. LPAP. You have to take the collection of, basically the completion will be the collection of all possible Lebesgue integrable, all possible pth power Lebesgue integrable functions. ठीक है? So corollary to this is it will be a corollary to this. For P in 1 infinity, the completion of CAB आपको पता है, it's a well known familiar space. CAB with the integral norm, with the P norm, is LPAB, which is the collection of all possible pth power Lebesgue integrable functions defined on AB. ठीक है? इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है. जो ऊपर वाली थ्योरम है इसमें आपने x की जगह लेना है AB, म्यू की जगह लेना है रिस्ट्रिक्शन ऑफ Lebesgue मेजर टू AB, और जो टोपोलॉजी होगी दैट विल बी दी टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय द यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ R ऑन AB. जो यूजुअल टोपोलॉजी है R की, इट विल इंड्यूस अ टोपोलॉजी ऑन AB. वही टोपोलॉजी आपने लेनी है और आपको ये मिलेगा. ठीक है? अब अभी पहले मैं ये 1 मिनट स्ट्रीमिंग स्टॉप कर रहा हूँ.